In the last lecture, we have seen a question how to compare the acidic strength in benzene type of compounds. This is a derivative of carboxylic acid, or I can say this is benzoic acid. Benzene के ऊपर COH है, and उसके para portion में you are attaching a group. The group can be hydrogen or CH3 or NO2, NH2 or Cl. Whenever you are given such questions, always first identify the effects which are shown by these groups. ये जो hydrogen है, this is reference. It is neither electron withdrawing nor electron releasing. CH3 is an alkyl group. Alkyl groups are all plus I groups. NO2, it can have minus I as well as minus M. But in the presence of minus M, minus I का effect negligible रहेगा. So we will be comparing overall with the help of minus M. NH2 जो है, उसके ऊपर lone pair है. So इसलिए it is electron releasing group. With respect to inductive effect, nitrogen being more electronegative, it will be minus I. Inductive effect के हिसाब से minus I है. ये resonance effect के हिसाब से plus M है. Okay. You need to know how to easily identify plus M groups and minus M groups. याद रखना important है. If you don't know how to identify that, we may not do any application. So ये minus A and plus M है. Out of these two effects, resonance is dominating. इसलिए plus M के साथ ही compare करेंगे. In halogens, very important. You have minus I and plus M. Plus M इसलिए है chlorine के ऊपर lone pair है. But we are considering minus I or the inductive effect to be dominating when compared to resonance. Reason क्या है उसके लिए? In case of resonance for chlorine, the orbital overlap is 3p and 2p. 3p का size और 2p के size में difference ज़्यादा होने की वजह से there is no effect overlap. Because of that, we always say inductive effect is more dominating in halogens when compared to resonance. याद रखना, very important. Fluorine के case में भी हम inductive effect को ही ज़्यादा मानेंगे because fluorine being more electronegative, even though it is having 2p overlap, it is not willing to give its electrons in resonance. Hence, even in fluorine, we will take minus A effect to be the dominating effect. उसके बाद, we know that electron withdrawing groups increases acidic strength, electron releasing groups decreases acidic strength. ये वाला point तो सब लोग को clarity आ गया होगा. In the acid, after removal of H positive, you are getting negative charge. उस negative charge को हमको खींचना है. Okay, electron withdrawing groups can withdraw that particular negative charge. Electron releasing groups will be increasing that particular negative charge. So releasing groups destabilize करेगा, withdrawing groups stabilize करेगा. So withdrawing में overall हमको यहाँ पे NO2 जो है, it is withdrawing minus दिख रहा है ना, minus M. Cl is also withdrawing, but NO2 is withdrawing electrons with resonance, which is the dominating effect. Hence this will be stabilizing more. So C सबसे ज़्यादा stick होगा. उसके बाद Cl भी withdrawing ही है, but it is withdrawing with inductive effect. इसलिए C के बाद E रहेगा. Then these two B and D are destabilizing. So rather than destabilizing, I have the reference ना. It is neither destabilizing nor stabilizing. So उसके बाद hydrogen का रहेगा. Then CH3 is destabilizing only by inductive effect. NH2 is destabilizing by resonance. Resonance के साथ ज़्यादा destability मिलेगा. Hence CH3 का पहले आएगा acidic strength में. उसके बाद last में D. Okay. I hope this is clear to everyone. If you want to compare the basic strength, exactly उसका उल्टा करना है. Electron releasing group चाहिए मुझे. Something is releasing electrons with resonance, बहुत best रहेगा. If something is withdrawing electrons with resonance, बहुत worst रहेगा. Okay? Okay, good. उसके बाद, to understand hyperconjugation, we studied about stability of alkenes. उस particular context में हम dienes को पहले लिया. In dienes, there are three types of dienes: isolated dienes, cumulated dienes, and conjugated dienes. Isolated dienes मतलब दोनों double bond के बीच में कुछ interaction नहीं है. Okay, बीच में there is at least one sp3 hybridized carbon. उससे ज़्यादा भी हो सकता है. दोनों double bond दूर है. Conjugated मतलब you are having pi alternate pi. If you are having pi alternate pi, there is resonance. Whenever there is resonance, there is stability. Cumulated मतलब both the double bonds are present on the same carbon. If both the double bonds are present on the same carbon, वो जो electrons है आसपास में है, there will be repulsive forces. Because of the repulsive forces, the stability is decreased. So out of all the things, out of these three, the stability order is conjugated greater than, isolated greater than, cumulated. And हमने heat of hydrogenation करके कुछ concept पढ़ा. Heat of hydrogenation is nothing but whenever I am adding hydrogen onto any alkene,
it is converting into alkane. Okay, first of all, alkane is more stable when compared to alkene. So in the process, always energy will be released. Hydrogenation is always an exothermic reaction. The one which is already stabilized, वो उतना ज़्यादा energy release नहीं करेगा. यहाँ पे देखो, this is already stabilized. This is least stabilized. So इसमें cumulated में the heat of hydrogenation is highest. In case of isolated or intermediate है, in case of conjugated, the heat of hydrogenation is the least. ये याद रखना, heat of hydrogenation is inversely proportional to stability. More is the heat of hydrogenation, less is the stability. Okay. So उसके बाद हमने एक example देखा था. The example is hydrogenation of alkenes. We are doing hydrogenation of ethene, propene, and butene. If you observe in all these things, I am converting one pi bond into two sigma bonds. एक pi bond को यहाँ पे break करके I am adding two hydrogens with the help of sigma bonds. यहाँ पे भी उसी pi bond को break किया, two hydrogens लगाया. Pi bond को break किया, two hydrogens को लगाया. If I am not using any organic principles, if I am comparing purely by thermodynamics, हमको ऐसा कुछ लग रहा है सब में एक ही pi bond को break कर रहे हैं, दो sigma bonds को बना रहे हैं. So we expect the delta H in all the cases to be same. But हमने inductive effect करके कुछ पढ़ा. Inductive effect में alkyl groups are electron releasing groups. If these are releasing electrons and ये pi bond में भी electrons है, there is repulsive forces. If there are repulsive forces, what will happen to the energy of the system? The energy of the system will be increased, or it is getting destabilized. So इस process में whenever I'm doing hydrogenation, the heat of hydrogenation must be more when compared to the ethene. And इस केस में you are having two alkyl groups. Two alkyl groups ज़्यादा electron release करेगा, यहाँ पे ज़्यादा destability बनेगा. So इस केस में we expect the heat of hydrogenation to be the highest. So expected order जो है delta H3 has to be greater. I am only comparing the magnitude, okay? I am not comparing the signs. क्योंकि ये सब exothermic है. Exothermic मतलब negative में ज़्यादा रहेगा. Okay? I am only comparing the magnitudes. Delta H3 has to be the highest, followed by delta H2 and then delta H1. Okay? But actual value क्या हुआ? Delta H1 is actual में delta H1 is the highest. मतलब ये सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, followed by delta H2 and delta H3. इसका मतलब क्या है? Stability order 3 has to be the most stable one, followed by 2 and followed by 1. Butene should be more stable compared to propene, compared to ethene. Right? Is there any disturbance in the background? ज़्यादा है क्या? ज़्यादा नहीं है ना? It's okay, right? Okay. तो यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिखा, जितना ज्यादा अल्काइल ग्रुप्स होते जा रहे हैं, द स्टेबिलिटी केप्ट ऑन इंक्रीजिंग. यहाँ पे एक ही अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे दो अल्काइल ग्रुप्स है. इसका मतलब इस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके इफ यू रिप्लेस वन मोर अल्काइल ग्रुप, उसका स्टेबिलिटी और ज्यादा रहेगा. We need to understand this based on a concept called hyperconjugation. देखो, नेम में ये, if you see in the name hyper मतलब क्या है? What is meant by hyper? हम कभी कभी क्लास में हो जाते हैं ना पढ़ते समय. हाइपर मतलब एक्सट्रीम कंडीशन. आप लोग पढ़ते नहीं हो, सुनते नहीं हो, सो कभी कभी भी बिकम हाइपर. मजाक कर रहा हूँ. हाइपर कॉन्जुगेशन मतलब extreme case of conjugation. What is meant by conjugation? Conjugation is nothing but you will be having parallel p orbitals and you will be jumping electrons. You will be shifting electrons. Okay. In case of resonance, we used to just shift the pi bonded electrons. याद है? Only the pi bond electrons used to jump from one place to another. Hyperconjugation में क्या होता है? This is an extreme case of resonance where we will be shifting the sigma bond. Sigma bonds are usually the strongest bond. If it is the strongest bond, उसको break करना मुश्किल होगा. So उसको भी मैं break करके I am making that particular sigma bond to participate in resonance. So it is an extreme case of resonance. Is that clear? Okay. It is the ability of the sigma bond electrons. I am taking the sigma bond electrons of an alpha hydrogen. We will understand what is meant by alpha hydrogen.
to undergo conjugation with the adjacent pi electrons. It is the ability of the sigma bond electrons of an alpha C bond H to undergo conjugation. To undergo conjugation मतलब to undergo resonance with the adjacent pi electrons. मतलब क्या है देखते हैं. It involves delocalization of sigma electrons. Again, I'm talking about only sigma electrons of an alpha C bond H. यहाँ पे आप लोग ये ऐड कर सकते हो. Of alpha C bond H of an alkyl group directly attached to an unsaturated system. The alkyl group is directly attached to an unsaturated system, मतलब double bond or triple bond, or to an atom with unshared p orbital. Or to an atom with unshared p orbital, मतलब you can have a carbocation or a carbon free radical. Carbocation में you are having an empty orbital, right? If you have carbocation, इसका hybridization क्या होता है? sp2 ना? sp2 मतलब एक p orbital बच गया. You are left with one p orbital, pure p orbital. This is nothing but unshared p orbital. Whenever you have an unshared p orbital, then so there can be some resonance. एक minute. So पहले let us try to understand what is meant by an alpha hydrogen and how to arrive an alpha hydrogen. Okay? उसके बाद hyper conjugation में mechanism exactly होता क्या है देखते हैं. Okay. If you have CH2 double bond CH bond H bond H bond H, ये जो particular part है, an alkene is treated as a functional group. Okay, an alkene is treated as a functional group. उसके attached carbon जो भी है already हमने देखा है alpha beta gamma nomenclature करके. The attached carbon, the carbon that is directly attached to the unsaturated system or a carbocation, the carbon that is directly attached to the unsaturated system or a carbocation, this particular carbon is called as alpha carbon. इसके ऊपर जो भी हाइड्रोजन रहेंगे, ये वाला हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, all of them are treated as alpha hydrogens. The hydrogens which are present directly on the alpha carbon, they are called as alpha hydrogens. Okay? Clear है? Okay. In order to, और एक condition है, अभी ये जो particular alpha carbon है, it has to be sp3 hybridized. If and only if it is sp3 hybridized, then we can have some hyperconjugation. Very important. ये जो particular atom है, it has to be sp3 hybridized. Okay. So in these questions, please identify the total number of alpha hydrogens. इस case में total number of alpha hydrogens कितना हुआ? The number of alpha hydrogens we have are 3 alpha H. In all the examples, please identify total number of alpha hydrogens. What is meant by an alpha carbon? Alpha carbon is one which is directly attached to the unsaturated system, which is sp3 hybridized. उसके ऊपर जो भी hydrogens है, all of them are called as alpha hydrogens. Identify the total number of alpha hydrogens in all the examples. Fast. विश्वेश थोड़ा पढ़ाई कर लेना.
हुआ है. This particular carbon, it is also alpha carbon. This is also alpha carbon. So total alpha carbons in this case we have are 6 alpha H. 6 alpha H. Okay. वैसा इस बाकी सब में कैलकुलेट करना. सर वो अनसैचुरेटेड चेन को भी जॉइंट होना चाहिए ना? Unsaturated को भी joined होना चाहिए. It has to be immediately attached to the unsaturated carbon. इसको आप लोग चाहिए तो you can split this. ये जो कार्बन है इसके ऊपर 2 CH3 ग्रुप्स है. ये है ना ये वाला स्ट्रक्चर. So you have 4 alpha carbons. ये भी अल्फा है. Alpha, alpha, alpha. So total alpha hydrogens are 12 alpha 12. hydrogen. very good. 12 alpha H. यहाँ पे 2 this is alpha nothing but an alpha carbon. So you have 2 alpha H. Very good. In this case, this is alpha. This is also alpha. This is also alpha. Right? Any doubt? So you have 2 plus 1 plus 3, 6 alpha H. Any doubt, anyone? सर वो इस केस ऊपर में वाला don't क्वेश्चन. ऊपर वाला क्वेश्चन ये वाला. This is attached to this. This is attached to this. इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा है. इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा है. It is attached to unsaturated system ना? हाँ सर. Okay. So this इस वाले one, क्वेश्चन में yeah. Sorry. This one I didn't get. ये वाला. Yeah. You are having this is the as आप कंफ्यूजन हो रहे तो पहले वो डबल बॉन्डेड जो कार्बन सिस्टम है उसको मार्क कर लेना. उसके अटैच्ड कार्बन्स ये वाला ये वाला ये वाला. तो सिर्फ द अल्फा कार्बन्स. आइडेंटिफाई द डबल बॉन्डेड सिस्टम. उसको मार्क कर लेना. उसके अटैच्ड कार्बन्स जो भी रहेगा ऑल ऑफ देम विल बी अल्फा कार्बन्स प्रोवाइडेड द कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड. sp3 हाइब्रिडाइज्ड मतलब it should have all sigma bonds. If it is having a pi bond it won't be sp3 hybridized. So यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड तो दिख रहा है सिस्टम. It is attached to this carbon which is not an sp3 hybridized carbon, or this is attached to this carbon which is not an sp3 hybridized carbon. Hence you don't have any alpha H in this case. No alpha hydrogen. Reason क्या है? ये दोनों sp2 हो रहे हैं. sp2 sp2. Understood? Okay. इस केस में देखो इस स्ट्रक्चर को पहले आप लोग चाहिए तो you have 2 substituents on this particular double bonded carbon which have 3 methyl groups. CH3 twice, 3 methyl groups, right? यहाँ पे CH3, 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 and this is again having 3 methyl groups. CH3, CH3, CH3. वैसा ही इस कार्बन के ऊपर भी है. Any doubt, anyone? कार्बन इसके ऊपर CH3, CH3 and CH3. Okay.
So tell me the number of alpha hydrogens you have in here. 4. कहाँ 4? It is 0. Alpha hydrogens. Alpha carbons are 4. Alpha hydrogens are 0. ये अल्फा कार्बन हुआ, ये भी अल्फा है, ये वाला भी अल्फा है. उसके ऊपर कुछ हाइड्रोजन दिख रहा है क्या? नो राइट. ये जो हाइड्रोजन है, these are not alpha hydrogens, these are beta. अल्फा से अटैच्ड कार्बन जो है, those are beta carbons ना. So you don't have any alpha hydrogens here. So in this case also no alpha H. Okay. Again, this is the unsaturated system, double bond hai. So this will be heated as alpha carbon. So you are having again 3 alpha H. ये भी alpha हुआ, ये भी alpha हुआ, 5 alpha H. Okay. Either you can have an unsaturated system or you can have a carbon atom with unshared p orbital. यहाँ पे unshared p orbital करके क्यों बोल रहा हूँ? Because the hybridization of this particular carbon is sp2. Carbon is making 3 bonds. If it is making only 3 bonds, there is no lone pairs. The hybridization is sp2. sp2 मतलब you are left with one unshared p orbital. इसके ऊपर एक p orbital रह गया. Whenever you have an unshared p orbital system, उसके attached carbon जो भी है, this is called as alpha carbon. And again in this case also you have 3 alpha H. Free radical जो है, ये जो free radical है, ये भी sp2 है, उसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है. You can have 2 electrons in it ना, any orbital. अभी इस orbital के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है, free radical. So this is an alpha carbon. This is also an alpha carbon. You are having 6 alpha H. Free radical system जो भी है, that free radical system is also an unshared p orbital क्योंकि इसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं हुआ. In case of carbocation, you have empty p orbital. In case of carbon free radical, you have a p orbital which is having only 1 electron. Okay? ठीक है. यहाँ पे देखो, this is the unsaturated system. ये अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन. इस कार्बन के ऊपर कितना हाइड्रोजन रहेगा? ये 2 हाइड्रोजन because it is forming 2 bonds और 2 हाइड्रोजन रहेंगे. यहाँ पे भी it is forming 2 bonds और 2 हाइड्रोजन रहेंगे. इस कार्बन के ऊपर कितना हाइड्रोजन रहेगा? 3 because it is forming only 1 bond ना. कार्बन का वैलेंसी 4 है, सो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन रहेगा. 3 + 2 + 2 कितना हुआ? 7 alpha H. Understood? Everyone understood? There were 3 How alpha to see for the number of alpha hydrogens? यहाँ पे श्रीजीत देखना, यहाँ पे this carbon is forming only 1 bond. कार्बन का वैलेंसी 4 होता है ना. सर ये समझा, ये वाला. हाँ हाँ सर. Whenever you are having a carbocation और एक कार्बन फ्री रेडिकल, उसके एडजेसेंट कार्बन्स को भी हम अल्फा कार्बन ही मानेंगे. उसके ऊपर जो भी हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन रहेगा. डेफिनेशन में either you need to have an unsaturated system or you need to have an unshared p orbital or a vacant p orbital. This is a vacant p orbital because you don't have any electrons inside it. कार्बन का outermost electrons इसमें चाहिए outer bonding. So ये वाला जो है empty है. यहाँ पे कार्बन का फ्री रेडिकल है ना. फ्री रेडिकल इज 7 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज. सो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है. If it is having only 1 electron, it is not shared with any other electron. This is an unshared p orbital. Okay? Okay sir. ठीक है. Now let us see mechanism of electron donation by hyperconjugation. ठीक है? Everyone observe. What is hyperconjugation? It is extreme case of resonance where I am shifting the sigma bonded electrons. CH double bond CH2. ये जो पर्टिकुलर कार्बन है ये अल्फा कार्बन हो गया. उसके ऊपर जो हाइड्रोजन है अल्फा हाइड्रोजन है. Always in conjugation, the sigma bond of the alpha C bond H. This is the alpha C bond H. These will be in conjugation. मतलब क्या है? आपको क्या करना है? Break this bond onto this carbon. If I'm breaking the bond onto the carbon, what will happen in the next structure?
I will get hydrogen, carbon, H positive, यहाँ पे negative, C double bond, CH2. Now can you see a conjugating system? Negative alternate pi bond. Okay, but ये negative charge किस वजह से आया है? Because of the sigma bond. I'm breaking the sigma bonded electrons onto the carbon, and this particular negative charge will now be in resonance. यहाँ पे आएगा, यहाँ पे जाएगा. So it will lead to the formation of, बस ऑब्जर्व करो आप लोग, C double bond H, यहाँ पे C bond CH2, इसके ऊपर नेगेटिव आ जाएगा. यहाँ पे आपको H पॉजिटिव ऐसा ही है. क्लियर है? In general, we won't be showing this particular structure. हम करेंगे क्या, डायरेक्टली जो सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पे बॉन्ड जैसा बना दो, इस पाई बॉन्ड को उठाओ. ओके, ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है पहले ब्रेक करके नेगेटिव पॉजिटिव जो किया है ना, ये स्ट्रक्चर नहीं दिखाते हम. डायरेक्टली वी विल मेक दिस सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा अल्टरनेट पाई. दिस इज द कॉन्जुगेटिंग सिस्टम. सिग्मा अल्टरनेट पाई, दिस इज द हाइपर कॉन्जुगेटिंग सिस्टम. Okay, not the normal resonance. This is the hyperconjugation. Extreme case of resonance where I am shifting the sigma electrons. Sigma alternate pi, इसको ऐसा bond बना देना, यहाँ पे positive charge आ जाएगा, and इस carbon के ऊपर negative. In this case, I have shown the resonance with one of the hydrogen. Similar thing can happen with the other two hydrogens. एक ही hydrogen का shift करवाया ना, the same thing can take place with the other hydrogens as well. So I can mark the structures, other two structures as, यहाँ पे H positive, C bond H, double bond CH, CH2 negative. I can also form the structure with the remaining hydrogen, H bond C bond H, यहाँ पे positive, double bond CH bond CH2 minus. Okay, is that clear? यहाँ पे स्टार्टिंग में या ये जो हाइपर कॉन्जुगेशन है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बेकर-नेथन इफेक्ट. इस साइंटिस्ट का नाम है बेकर-नेथन इफेक्ट. सिग्मा पाई इफेक्ट. सिग्मा पाई इफेक्ट करके क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज द सिग्मा बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद द पाई बॉन्ड. Sigma alternate pi na, sigma pi effect, also called as no bond resonance. I am calling this as no bond resonance because if you are observing the resonating structures, there is no bond between carbon and hydrogen. दिख रहे हैं क्या resonating structures में? In the individual resonating structures, there is no bond between carbon and hydrogen, hence it is called as no bond resonance. If I want to draw the resonance hybrid, everyone please help me in the resonance hybrid. यहाँ पे हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, CH2, इन दोनों के बीच में बॉन्ड पार्शियल हो जा रहे हैं. कैन आई से दैट द बॉन्ड इज बिकमिंग पार्शियल बिकॉज इसमें बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे बॉन्ड है, इसमें बॉन्ड नहीं है. सो इफ आई एम फॉर्मिंग द रेजोनेंस हाइब्रिड, इन सम केसेस देयर आर नो बॉन्ड्स, इसलिए बॉन्ड पार्शियल हो गया. इन सब के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूट हुआ, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव. एनी डाउट? सो व्हाट इज हैपनिंग इन हाइपर कॉन्जुगेशन? आई एम डिस्ट्रीब्यूटिंग द सिग्मा बॉन्ड. इनिशियली ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है, these are concentrated only between these two atoms. Whenever I'm distributing, the sigma bond electrons are present between these atoms. So whenever there is distribution of electrons, what will happen to the stability? Increases. It will be increased. यहाँ पे स्टेबिलिटी बढ़ रहे हैं. यहाँ पे तीन हाइड्रोजन, तीन सिग्मा बॉन्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया. कहने से जितना ज्यादा बॉन्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगा. सो कहने से मोर आर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन. इसमें तीन ही अल्फा हाइड्रोजन है. अगर इस पर्टिकुलर हाइड्रोजन को भी सब्स्टिट्यूट करके और एक CH3 कर दिया, तब 6 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा. एक बार यहाँ पे ऑब्जर्व करना आप लोग. इन दिस केस यू आर हैविंग ओनली 3 अल्फा H. Am I right? You are having 3 alpha H.
So the distribution is of 3 alpha H. In this case, the number of alpha H are 6 alpha H. So you are distributing 6 alpha hydrogens. More are the number of alpha hydrogens, more will be the stability of the alkene. Everyone, remember this. More the number of alpha hydrogens, more is the stability of alkene. More the number of alpha hydrogens, more are the hyperconjugating structures. Can I say this? More are the hyperconjugating structures. Hence, more will be the stability of alkene. Clear? जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन्स रहेगा, इसमें 3 बॉन्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया हमने. अगर आपको और एक CH3 रहा तो 6 बॉन्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और एक CH3 रहा तो 9 बॉन्ड्स को, और एक CH3 रहा तो 12 बॉन्ड्स को. जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन्स रहेगा उतना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा, उतना ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगा. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. ओके, फाइनली आपको 12th में बोर्ड्स के लिए भी यही इंपॉर्टेंट रहेगा. यू नीड टू नो हाउ टू कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट alkenes. Very 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 important for your boards, everyone. 12th में boards के लिए important है. The order is how to compare the stability of alkenes. How to compare the stability of alkenes? By seeing the number of alpha hydrogens. ये सब alkenes है ना, ये तीनों alkenes ही है. इसमें there are no alpha hydrogens, इसमें there are 3 alpha hydrogens, इसमें there are 6 alpha hydrogens. So just see for the number of alpha hydrogens. जिसमें ज्यादा alpha hydrogens रहेगा उसका stability ज्यादा होगा. Clear? ओके, सो यहाँ पे ओवरऑल ऑर्डर दिया है. It is called as no bond resonance as there is no C bond H bond in the contributing structures. More is the number of alpha hydrogen, more is the stability due to hyperconjugation, and more will be the no bond resonance energy. No bond resonance energy मतलब hyperconjugation energy. जितना ज्यादा स्टेबल हो रहे उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा. एंड लोअर इज द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन. जितना ज्यादा स्टेबल अल्कीन हुआ उसका हीट हाइड्रोजनेशन उतना ही कम रहेगा. हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एंड द स्टेबिलिटी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. राइट एवरीवन, सभी लोग? ओके, इट इज अ परमानेंट इफेक्ट. दिस इज आल्सो अ परमानेंट इफेक्ट. मतलब एज लॉन्ग एज द pi bond is present, you will always be seeing the bonds as partial and there are some charges on the atoms. Abhi, let us try to compare this effect with the normal resonance. What do you think? Is this effect more dominating than resonance or less dominating than resonance? Less dominant. Less dominating. क्यों लगा आपको ऐसा? वो सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी लगेगा. Very good. Because in this case I am breaking the sigma bond. Sigma bond is a strong bond. In case of resonance we were breaking pi bonds. Pi bonds जो है वो weak bond से easily break करके उसको transfer कर सकता हूँ. इसमें भी electrons transfer ही हो रहे हैं. The electrons are getting transferred in this case also, but in order to transfer those electrons I need to break a sigma bond which is a strong bond. So इसलिए जो particular effect है, this is weak, and if I give score for this also, हमने इंडक्टिव इफेक्ट को स्कोर कितना दिया? 1 10 1 ये 1. एंड रेजोनेंस को कितना दिया? 1 मिलियन. 1 मिलियन. ओके, सो हाइपर कॉन्जुगेशन को स्कोर कितना दूं? आपको क्या लग रहा है? Anywhere rough? 10,000. 10,000. ओके, 10,000 नहीं है, दिस इज जस्ट 100. अभी भी देखो, अभी भी यू हैव ह्यूज डिफरेंस बिटवीन रेजोनेंस एंड हाइपर कॉन्जुगेशन. 1 मिलियन 100 मतलब 10,000 टाइम्स ज्यादा है. 10,000 टाइम्स है ना? ओके, क्लियर है? सो इन द प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंस you may again omit hyperconjugation. मतलब दोनों इफेक्ट्स लग रहे हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा रेजोनेंस अगर हो रहे तो. इफ देयर इज रेजोनेंस बाकी सब कुछ भूल जाओ.
ओके वैसे एक मीम रहता है ना, सब लोग हीरो ही है until the actual hero comes, कुछ तो ऐसा कुछ मीम रहता है ना, वैसे if there is resonance बाकी सबको भूल जाओ, ठीक है, याद रखना। ओके once look at this alkyl groups, if I'm having normal alkyl groups, if I'm comparing the electron release by inductive effect, inductive effect में हमने क्या कहा, more are the or more is the length of the carbon chain, more will be the inductive effect, or else a 3-degree alkyl halide or 3-degree alkyl group is more electron releasing when compared to 2 degree, then 1 degree, then methyl, 3 degree greater than 2 degree greater than 1 degree. This is the order of electron release with respect to inductive effect. If I'm comparing the order of electron release with hyperconjugation, hyperconjugation में हमें क्या चाहिए, you need to have more and more alpha hydrogens. इस केस में देखो you are having 3 alpha H, in this case you are having only 2 alpha H, इस केस में 1 alpha H है, इस केस में 0 alpha H है. So with respect to hyperconjugation, मिथाइल का सबसे ज्यादा हो रहा है, मिथाइल सबसे ग्रेटर देन 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री. 3 डिग्री के केस में हाइपरकॉन्जुगेशन हो ही नहीं सकता बिकॉज यू डोंट हैव एनी अल्फा हाइड्रोजन. इन दिस केस यू हैव 1 अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन. उल्टा हो गया देखो, इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, बट हाइपरकॉन्जुगेशन के हिसाब से मिथाइल ग्रेटर देन 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री. ओके ओके एक मिनट. Okay, I hope this order is clear. Let us see the mechanism of electron release in case of carbocation. हमने definition में ऐसा कुछ लिखा ना, there is one alternate definition for hyperconjugation, which is it involves delocalization of sigma electrons of the alpha C bond H of an alkyl group directly attached to an atom of an unsaturated system or to an atom with an unshared p orbital. Here you are having an unshared p orbital. So आपको करना क्या है, अभी के लिए ये भी दिखा रहा हूँ. You don't need to show this particular structure. पहले इस बॉन्ड को ब्रेक करके what we do, उस कार्बन के ऊपर we make a negative charge and इस हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज. नो नीड टू शो दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर. रीजन क्या है, whenever you have greater number of charges that particular system is unstable. So ये जो particular structure है ये contribute ही नहीं करेगा. We will be directly forming the bonds. So इन दोनों के बीच में bond बना दो, which will give me H bond C, H positive, double bond CH2 bond hydrogen. Similarly, I can also mark with other 2 hydrogens H bond C bond H, इसके ऊपर positive, double bond CH2. I can also mark with the remaining of the hydrogen H, इसके ऊपर positive. ये वाला समझ में आ रहा है ना मैं क्या कर रहा हूँ? Okay, you can clearly see distribution of positive charge on the hydrogens as well. In this structure, the positive charge is entirely present on the carbon, but in these structures, the positive charges are getting distributed on hydrogen. So, can you see the stability of carbocation with the help of hyperconjugation? आया समझ में? Suppose मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ. You need to tell me the stability of the carbocation. CH3 C bond CH3 यहाँ पे पॉजिटिव, CH3 bond CH2 positive. Out of these 2 carbocations, which will be more stable?
First one. First one will be more stable. Reason? Sir, more alpha hydrogen. More alpha hydrogens. यहाँ पे 3 alpha H है आपको, इसके ऊपर भी 3 alpha H है. So you have in total 6 alpha H. In this case you have only 3 alpha H. जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन रहेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन में हम कर क्या रहे हैं, ये पॉजिटिव चार्ज को हाइड्रोजन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ना. सो जितना ज्यादा हाइड्रोजन रहेगा उतना ज्यादा हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा. More is the charge distribution, more is the stability. So you just need to see for the number of alpha hydrogens. You can also compare this by inductive effect. Inductive effect के साथ भी compare कर सकते हो. In this case you are having 2 alkyl groups. In this case you are having only 1 alkyl group. But rather than comparing it by inductive effect, which is a less dominating effect when compared to hyperconjugation, compare it by hyperconjugation. जो ज्यादा dominating है पहले उसके हिसाब से बात करेंगे ना. अगर उससे आंसर नहीं आ रहा है तो then we will go to the next effect. Is that clear? Okay, the reason for this particular stability is more are the alpha hydrogens, but not because of the inductive effect. Inductive effect के हिसाब भी है, मानता हूँ, but that being a less dominating effect, पहले उसको देखना नहीं है. Clear? Is this clear? Okay, good. More the number of alpha hydrogens, more is the stability of the carbocation due to delocalization of positive charge. एक क्वेश्चन आपको यहीं पे पूछ रहा हूं मैं, बाद में कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए. यहाँ पे आ गया क्या? ठीक है. Can there be HC indicates hyperconjugation. Can there be a hyperconjugation in carbanion? Can there be hyperconjugation in carbanion? एक एग्जांपल लिख रहा हूं आपको. CH3 CH2 नेगेटिव चार्ज. Can there be hyperconjugation in carbanion? अभी हमने कार्बोकैटायन के अंदर किया है. CH3 CH2 पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे hyperconjugation करके कुछ किया. I am asking you the question, can there be hyperconjugation in carbanion? The answer is no. Reason क्या है? What is the definition? The definition says you need to have an unshared p orbital. यहाँ पे आपको पास एक वेकेंट ऑर्बिटल है, सो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ट्रांसफर हो रहे हैं. नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है? यू आर हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड दिस ऑर्बिटल, सो यू कैन नॉट हैव ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू दिस. और उल्टा सोचो, पहले हम क्या करते हैं, बॉन्ड को ब्रेक करते हैं ना. यहाँ पे पॉजिटिव लगाओ, यहाँ पे नेगेटिव करो, बॉन्ड CH2 नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, इन दोनों के बीच में कुछ रेजोनेंस होगा क्या? यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, जम के कहाँ पे करेगा? समझ में आया? ओके, क्लियर. सो देयर इज नो हाइपरकॉन्जुगेशन, नो HC. Another question. Can there be hyperconjugation in carbon free radical? Can there be hyperconjugation in carbon free radical? Example, CH3 CH2 ऊपर एक इलेक्ट्रॉन. होगा कि नहीं बता दो, कैसे होगा देखते हैं. It is satisfying the condition. You are having an unshared p orbital. उस p orbital के अंदर कार्बन फ्री रेडिकल मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन है, ऑड इलेक्ट्रॉन है ना. उस पर्टिकुलर ऑर्बिटल के अंदर you are having only 1 electron, so it is an unshared p orbital. You can have hyperconjugation. Let us see कैसे होगा. मैंने क्या कहा आपको? Whenever you see free radicals in any molecule, whenever you are breaking the bond, always break the bond in terms of free radicals. मतलब ये जब bond break करते हो आप, break in terms of free radical. सब के होगा क्या? यहाँ पे HC
यहाँ पे एक फ्री रेडिकल आ जाएगा, इसके ऊपर ऑलरेडी एक फ्री रेडिकल था, यहाँ पे एक फ्री रेडिकल है, यहाँ पे एक फ्री रेडिकल है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनाओ। दिस इज द हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. ओके, सो ब्रेक करके यहाँ पे ब्रेक किया तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन। Whenever you see two free radicals on the adjacent atoms, always make the bond. If you are not making the bond, that won't be an hyperconjugating structure because it is not following the rules. Rules में हमने rules of residence में total number of free radicals in all the structures must be constant करके लिखा। यहाँ पे एक free radical ले तो इसमें भी एक ही free radical दिखना चाहिए। ये ब्रेक करके free radical जैसे लगा दिया तो 3 free radicals दिखेगा। Okay, so don't show that. Make the bond between these two. Is this clear? Yes, sir. Yes. Good. ठीक है, एक 2 मिनट ब्रेक ले लो. We will go to the applications of hyperconjugation. So let's go to the applications of hyperconjugation. Very very important. आपको बोर्ड्स में भी डायरेक्ट आएगा क्वेश्चन. ये hyperconjugation पढ़ते समय how did we start? By comparing the stability of alkenes. उसमें butene का stability सबसे ज़्यादा हुआ, followed by propene and then ethene. In the butene you have more number of alkyl groups or you have more number of alpha hydrogens. So if you want to compare the stability of alkenes, simply see for the number of alpha hydrogens. More are the number of alpha hydrogens, more will be the stability. Okay. So ये जो particular compound है, in this case I am having 9 alpha hydrogen, and this case I am having only 4 alpha hydrogens. As you are having 9 alpha hydrogens in this alkene, this will be more stable, followed by this. और general order यहाँ पे लिखा है, सबसे ज़्यादा maximum number of alpha hydrogens which you can have are 12. सबसे ज़्यादा 12 है. Then एक substitution कम. यहाँ पे all the hydrogens which are present on the alkene, ethene में जो भी 4 hydrogens रहेगा, all the hydrogens are substituted by alkyl groups. ये जो 4 hydrogens है, all these 4 hydrogens are substituted by methyl groups, which gave me 12 alpha hydrogen. In this case, one of the hydrogen or one of the methyl group is replaced by hydrogen. So now you got 9 alpha hydrogens. Next case में और एक methyl group घटा देना. Whenever you are removing the methyl group, either you can remove the methyl group on this carbon or you can remove the methyl group on this carbon. Okay. If I am removing the methyl group on this carbon, it will lead to the formation of this particular structure. इसमें 2 types of isomers रह सकता है. मतलब ये जो particular CH3 है, if both of them are present on the same side, it is called as cis. If both of them are present on the opposite sides, it is called as trans. If both of them are present on the same side, it is called as cis. If both of them are present on the opposite side, it is called as trans. Trans is more stable than cis. We will understand this whenever we are seeing about cis and trans isomers. बाद में देखते हैं. But अभी के लिए इतना करना. Both of them are having 6 alpha hydrogens. Even though both of them are having 6 alpha hydrogens, trans is considered to be more stable than cis. यहाँ पे देखना. In this case, I am removing the CH3 which is present on this carbon. यहाँ पे 2 CH3 है, यहाँ पे 2 hydrogens है. If 2 methyl groups or if 2 groups are present on the same carbon, then it is called as geminal. यहाँ पे methyl groups किस carbon पे है? Both of them are present on adjacent carbons. In this case, both the methyl groups are present on the same carbon. Okay. If 2 functional groups or if 2 same groups are present on the same carbon, in that case, it is called as geminal. These two are called as vicinal. ऐसा याद रख सकते हो आप लोग. जो cis and trans इसमें जो भी हुआ, cis and trans, they come under the category of vicinal. Vicinal का मतलब ये है, both the same groups are present on
adjacent carbon atoms, they are present in the vicinity, side by side है. Okay, यहाँ पे both the methyl groups or both the same groups are present on the same carbon, hence it is called as geminal. If you have 6 alpha hydrogen, आपको 3 varieties हो सकता है, एक trans, एक cis और एक geminal. The order of stability, remember this order, very important. Trans greater than, geminal greater than cis. Okay. उसके बाद 3 alpha hydrogens का केस हुआ, उसके बाद no alpha hydrogens. सबसे ज्यादा stable, highly substituted alkene. We call this as highly substituted alkene. Substituted करके क्यों बोल रहा हूँ? All the hydrogens are substituted by methyl groups. This is one substitution less. एक particular methyl group को हटा के hydrogen लगाया. This is two substitutions less. यहाँ पे 3 substitutions कम हुआ. In this case, there is no substitution. Is this clear? Just you need to see for the number of alpha hydrogens. I hope this is clear. Okay. ये याद रखना, अलग से याद रखना exclusively important for your boards. मतलब एग्जैक्ट ये नहीं है तो इसके मॉडिफिकेशन में आएगा. You need to know this particular order and how I am comparing that order. If you want to understand your 12th boards, very important. Highly substituted alkene is more stable because of the greater number of alpha hydrogens. उसके बाद एक substitution less, उसके बाद 2 substitution less और 6 alpha hydrogens वाला. 6 alpha hydrogens के केस में आपको 3 cases आया, trans greater than, geminal greater than cis. Then 3 alpha hydrogens, or you are having only 1 substitution. No alpha hydrogens or no substitutions. Okay. Next, acidic character of alkenes. Everyone concentrate here. Whenever I am having a hyperconjugation, यहाँ पे देखते हैं जो हम starting में पढ़ा था. हाँ. Whenever I am doing hyperconjugation, what is happening to these bonds? Those bonds are becoming partial. यहाँ पे without any hyperconjugation, you are having complete bond like. Okay, you have complete bond order, or you have bond order as 1. Whenever I am making them to participate in hyperconjugation, what is happening in the resonance hybrid? You are having partial bonds. Partial bonds का मतलब क्या है? उसका bond energy क्या हुआ? घटा या बढ़ा? कम हो गया. कम हो गया. If bond energy decreases, I can break this particular C bond H very easily. If I'm breaking that particular C bond H very easily, can I say its acidic strength got relatively increased when compared to this structure? What is meant by an acid which gives me H positive? I am easily removing H positive from this particular structure compared to this structure because the bond in this case is partial and bond in this case is complete. इस case में bond break करना आसान रहेगा. So because of hyperconjugation, what is happening to the acidic strength of alkenes? It is getting increased. Increasing. Okay, थोड़ा बड़ा है. इसका मतलब ये नहीं है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा हो गया. Okay, बस मैं ये बोल रहा हूँ alkene के अंदर भी थोड़ा बहुत acidic character है. Okay, I am referring to only that. I am not saying that they have become considerably more acidic. Now, even now, sulfonic acid will be the strongest acid. हमने ऑर्डर में भी, अगर आपको याद है तो ऑर्डर में alkene को भी ऐड किया था लास्ट में. यहाँ पे alkene को ऐड किया, उसके बाद alkene. So alkene is still lesser acidic when compared to amine, alkyne, all these things. But alkene से थोड़ा ज्यादा acidic हुआ. Clear? And please observe this, everyone. Whenever I'm breaking the bond, I'm not breaking the bond, this particular bond, C bond H. Alkene से attached जो कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर जो भी हाइड्रोजन है उसको ब्रेक कर रहा हूँ. I am not breaking this C bond H. Observe that. These hydrogens are becoming acidic because of their participation in hyperconjugation. Not this hydrogen. Clear? ये जो C bond H है, इसको ब्रेक नहीं कर रहा हूँ मैं. I hope that is clear to you. Okay. So यही लिखा. Hyperconjugation weakens the alpha C bond H in alkenes and makes it acidic. So I can remove. So acidic strength order में, if I'm comparing this with a normal alkane, ये क्या हो गया? This is an alkane.
and this is an alkene. Alkene के केस में this hydrogen is becoming more acidic when compared to any of these hydrogens, because in this case these particular hydrogens have become partial. The bonds of these hydrogens have become partial. इसको easily break कर सकता हूँ. break करने के बाद भी एक बार देखते हैं. If I am breaking the bond, जो negative charge आया है, it is participating in resonance. मतलब the conjugate base is stabilized, right? Whenever the conjugate base is stabilized, उसका corresponding acid क्या होता है? It will be relatively strong. इस केस में what are the conjugate bases I can form? I can remove H positive and I can form this conjugate base, or I can remove H positive, I can form this conjugate base. इन दोनों में अगर मुझे कंपेयर करना है, इस केस में भी इन दोनों में मुझे कंपेयर करना है, तो this is a better conjugate base. Reason क्या है? It is attached to only one alkyl group. Electron releasing है ना, प्लस है. alkyl group का प्लस है रहेगा, प्लस है ग्रुप से वो डिस्टेबलाइज हो रहा है. यहाँ पे क्या हो रहा है? This is attached to alkyl groups on two sides. ये भी alkyl group है, ये भी alkyl group है. So it is getting destabilized more and more. Okay, ये extra point है, not so required. अगर इस केस में acidic strength कंपेयर करना है तो इन दोनों में से कौन बेटर होगा करके क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. A से निकालना है H पॉजिटिव या B से निकालना है? A से निकालने से बेटर होगा. जो भी कॉन्जुगेट बेस बन रहे हैं, it is relatively more stable when compared to this conjugate base. यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बीच वाले कार्बन पे है, दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, वो अनस्टेबल होता जा रहा है. इज दिस क्लियर? हो गया ऑलमोस्ट. वी आर डन. ऑलमोस्ट हो गया. ओके. यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया था आपको, अल्कीन दिया. यहाँ पे भी ये जो हाइड्रोजन्स है, this can participate in hyperconjugation. Even these hydrogens can participate in hyperconjugation. You need to tell me out of these two which is more acidic. Out of 1 and 2, which is more acidic? Answer? Sir, 1. 1 is more acidic. ओके. जब भी आपको ऐसा कंफ्यूजन आता है ना, उसका कॉन्जुगेट बेस बनाओ. कॉन्जुगेट बेस मतलब क्या है? रिमूव द H पॉजिटिव. इफ आई एम रिमूविंग द H पॉजिटिव, दिस कन्वर्ट्स इनटू RCH. इसके ऊपर नेगेटिव CH डबल बॉन्ड CH2. इसके ऊपर इफ आई एम रिमूविंग, दिस विल कन्वर्ट इनटू RCH negative C double bond O bond H. I can have resonance in both the structures. यहाँ पे this will be going on to this. If I draw the resonating structure, what is happening? In this case, I am distributing the negative charge on the carbon. If I am drawing the resonating structure in this, I am distributing the negative charge onto oxygen, which can handle the negative charge better. Oxygen. Oxygen. तो इन दो केसेस में आपको क्या लग रहा है? Which particular conjugate base is more stabilized? Second. This is more stabilized, na? Very good. This is more stable. If this is more stable, उसका corresponding acid क्या हो जाएगा? Strong हो जाएगा. This will try to lose more and more H positive. Okay, because if it is losing H positive, इसका conjugate base अच्छे से stabilize हो रहा है. ये भी stabilize हो रहा है. I am comparing the acidic strength between alkenes and aldehydes. This is an aldehyde, na? So an aldehyde is more acidic when compared to alkene. Okay, an alkane is lesser acidic when compared to alkene. An alkene is further less acidic, or an alkene is less acidic when compared to aldehyde. I hope this is clear. And ये दोनों में acidic character क्यों generate हो रहे हैं? Because of the participation of these hydrogens in hyperconjugation. ये दोनों hyperconjugation में participate कर पा रहे हैं, इसलिए वो acidic हो पा रहे हैं. Once they are becoming acidic, I am comparing between them. I hope that's clear. Okay.
Okay. Yes. Stability order of these carbocations. Tell me. So 1 greater than 2 greater than 3 greater than 4. And the reason? I compared it by inductive. अब वही बता रहा था मैं. Please don't compare it by inductive effect. Hydrogen. It is a weak number of alpha hydrogens. Inductive effect सबसे पहले पढ़ते हैं, वही बच्चों के दिमाग में रह जाते हैं, क्योंकि उससे इंडक्टिव इफेक्ट के बाद से क्लास सुनना ही बंद कर लेते हैं. इंडक्टिव इफेक्ट से कंपेयर नहीं करना. हाइपर कॉन्जुगेशन से भी. हाइपर कॉन्जुगेशन से सबसे पहले कंपेयर करना है. If they are asking what is the reason for its stability, in the option you will see hyper conjugation. You won't be seeing inductive effect. Inductive effect भी दिया तो sorry. उससे भी आएगा ना, मतलब अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा है. उससे भी आएगा. But the major contributing reason is, अभी तुम आरसीबी का फैन बोल रहे. If I ask why, will you say Washington Sundar or Virat Kohli? Virat Kohli. If you want to place bet on RCB, Washington Sundar है, मैं लगा दूंगा bet. ऐसे बोलोगे क्या? नहीं ना? नहीं. The dominating factor is first hyperconjugation, उसके बाद inductive effect है. Clear है? So क्योंकि ये आदत हो जाएगा आपको. Don't say that. First see by hyperconjugation. In fact, first see by resonance. अगर resonance नहीं है तो then go for the hyperconjugation. अगर hyperconjugation भी नहीं है तो then go for the inductive effect. इस केस में resonance नहीं है ना? Is there any resonating system? No, right? So I'm comparing it by hyperconjugation. इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन्स है? 9 अल्फा H. 9. 6 अल्फा H. 6 alpha H. 3 alpha H. 3 alpha. 3 alpha H. No alpha H. 0. Okay. 0. So greater than. Clear? Very good. Comparison of all effects. Inductive effect, resonance, hyperconjugation. हमने जो भी पढ़ा है उसके लिए comparison लिखा है यहाँ पे. Inductive effect is happening through only sigma bonds, or it is nothing but sigma-sigma interaction, because you are withdrawing electrons through strong sigma bonds, and you are just shifting the electrons. You are not transferring the electrons. Okay, electrons are shifted through strong sigma bonds. Resonance जो है, it is pi. वो जो नेगेटिव चार्ज जो है वो भी पाई बॉन्ड जैसा ही बनेगा. लोन पेयर जो है वो भी पाई बॉन्ड जैसा बनेगा. सो इट इज द इंटरेक्शन बिटवीन पाई एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स. इन दिस केस द इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड थ्रू वीक पाई बॉन्ड्स. एज द इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड एंड द पाई बॉन्ड्स आर वीक, द ट्रांसफर इज वेरी एफिशिएंट, और द इंडक्टिव और द रेजोनेंस इफेक्ट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इफेक्ट. ओके. हाइपर कॉन्जुगेशन, it is the conjugation between sigma and pi bond. It is the extreme case of resonance. Hyper indicates extreme. Hence, I am making the sigma bond to participate in resonance. Okay, sigma and pi resonance. In this case, electrons are transferred through strong sigma and weak pi bonds. Strong sigma and weak pi. So overall, ये जो effect है relatively strong रहेगा inductive effect से, but बहुत weak रहेगा resonance के comparison में. So order of importance: resonance greater than hyperconjugation greater than inductive effect. Clear है? Okay. Okay. Tell me which is more stable carbocation. Second one. Everyone, once look at that. Which is more stable carbocation? Second greater than first. Reason? सेकंड में रेजोनेंस होगा. सेकंड में रेजोनेंस होगा. ओके. इफ आई आर टॉकिंग अबाउट ओनली इंडक्टिव इफेक्ट, ये दोनों प्लस आई ग्रुप्स है. ये वाला प्लस आई है, ये वाला माइनस आई है, बट माइनस आई के डोमिनेंट है, माइनस आई से भी ज्यादा डोमिनेंट है रेजोनेंस. सो इसमें रेजोनेंस हो सकता है. सेकंड इज मोर स्टेबल एंड रेजोनेंस होके इट कैन फॉर्म एन ऑक्टेट कंप्लीटेड स्ट्रक्चर. ऑब्जर्व दैट. डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया,
This is an octet complete structure. Octet completion will lead to significant amount of stability. So 2 जो है, it is 1 million या 10 million times more stable than 1. Okay, समझ में आया? If I am comparing only by inductive effect, OCS में क्या है? माइनस इफेक्ट हो गया. माइनस इफेक्ट से कंपेयर कर रहा हूँ तो आपको तब लगेगा 1 is more stable. But first see for resonance. Resonance कुछ हो रहा है कि नहीं? Clear? Okay. Which is more stable? Alkene. Alkene की stability. Come on. Alkene की stability in general हम alpha hydrogen से करते हैं. Tell me the number of alpha hydrogens in first carbon, in first compound and in the second compound. Number of alpha hydrogens. First one 8. First में 8 है. So आपको alpha carbons पहले identify कर लेना. Alpha, alpha, alpha. So you have 8 alpha H. Okay. Second में 7. This is alpha. You just need to 7 कहाँ है? ये alpha है बस. You have only 1 alpha hydrogen. Alpha. You need to see an sp3 hybridized carbon. ये एक ही है. Any doubt? So what is the order of stability? 1 greater than. हाँ, 1 greater than 2 नहीं है. 2 greater than 1. What you need to say? ठीक है, alpha hydrogens तो देखा आप लोग. So hyperconjugation ज्यादा रहेगा. But in 2 there is resonance. Pi alternate pi. Okay. Resonance is more dominating effect है. सबसे ज्यादा रेजोनेंस है. अगर रेजोनेंस नहीं हो रहा तो तब आपको हाइपरकॉन्जुगेशन देखना है. सो यहाँ पे तो रेजोनेंस हो रहे हैं ना. सो रेजोनेंस की वजह से ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगा. Hence 2 is greater than 1. Clear है? Yes, sir. Sir. Okay. Thank you everyone. We will start with electromagnetic effect in the next lecture.